कंप्यूटेशनल फिजिक्स में जो हम यूज़ करेंगे, बेसिकली जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो है C++। ठीक है बेटा, C++ हम लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। इसकी बेसिकली हिस्ट्री क्या है? 1960 में सबसे पहले ये डेवलप हुई, और जो लैंग्वेज डेवलप हुई उसका नाम फोरट्रान था। और फिर ये ऐसा 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 लैंग्वेज अपने अगले मरहले में जाने के बाद फिर लैंग्वेज मॉडिफाई होने के बाद CPL लैंग्वेज बन गई, जो कि कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। दैट वाज डेवलप्ड इन 1963। बेसिकली जो पीछे जो बाद में जो लैंग्वेज थी, पहले जो लैंग्वेज थी वो उसकी जो खामी थी उसको हमने CPL में रिमूव किया, और फिर इस तरह इसकी जो ऐसा इसकी मज़ीद एडवांस फॉर्म आती गई। और उसके बाद जो बाद में जो मार्टिन रिचर्ड ने जो डेवलप की BCPL, दैट इज एब्रिविएटेड बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट वाज डेवलप्ड इन 1967। उसके बाद बेटा अगर आप ऐसा इसके मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, जो डेवलपमेंट की तरफ जाते जाते जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, जो बेसिकली हमने देखा कि the American National Standard Institute, that is ANSI, developed a standard version of a language. Standard version of a language. The standard version is known as ANSI C. This is new version provided many features that were not available in the older version, that is CPL and BCPL, etc. So the ANSI C is the modified form of the previous languages, that is CPL and BCPL, and it is a standard language. After that, the Bell Labs developed a C++ languages in 1980. The first commercial release of this language appeared in October 1985. It was originally named C with classes. It was enhancement to the C languages. It allowed the use of the programming technique known as object-oriented programming language, that is OOP. Basically, the C++ language was defined during 1980s and it became a unique language. It was very much compatible with the code of C and provided the most important characteristics of C. So the language became very popular, and now it is preferred language to develop the professional applications on all platforms. Okay, beta, this is the brief history of the C++ language. Now I want to discuss some important features of the C++ language. Number one feature is the convenient language. Convenient language is the first feature of the language. The convenient language. C++ is a very convenient language. It provides many facilities in easier way that were difficult to use in a low language. Actually, there is two types of languages. That is the high-level language and the low-level language. I want to discuss briefly low-level language and the high-level language. The low-level language, the basic types of the language, the low-level language. Low level and high level. Low level means the language that we cannot understand easily. It means this language is in the form of 0 and 1, that is called bit. 0 means off bit and 1 means is on bit. So it is not easy to understand for the user. It is easy understandable by the computer because it is a computer language and or a machine language. It is also be called as a binary language. We will discuss in detail in the next chapter. And another is the form of the high level language. High level language is the similar, that is the human being language, and we easily understand this high level language. And there is a bridge between the low and high level language. This bridge is called the interpreter or the compiler that convert the high level language into the low level language and low level language into the high level language. It is very easy. Supposed to be, this is the
computer, and this is the interface, and this one is the human being. This bridge is known as the compiler. This compiler means when we enter some things like a word hello, this gets converted in the binary code, that is in the 01 form, and also this is converted in the also 01 form. First is converted into low level language, and then this low level language interpreted by the compiler, and then the user use it easily and understand it easily. It means the interface between the low and high level language is the interpreter, that is the compiler. That compiler is easily convert the low level language into the high level language. That is easily understandable by the human being or a user, and the high level language will be converted into the low level language, that is also be easily understandable by the computer. So this interface is provide the facility between the computer and the human being. So C++ is a first feature of the C++ is a very convenient language between the user and machine. Okay, number next feature of the C++ language is the well-structured language. It is a well-structured language. I will discuss this in the future. What do you mean by the well-structured language? Well-structured means it have a specific grammar. It have a specific grammar. It have a specific rules as compared to the other previous language. Number next is the case sensitive. This language is a very case sensitive language. Case sensitive means that it can be differentiated between the uppercase and the lower case. All keywords are written in the lower case. This feature makes it easier to maintain or upgrade your source code as compared to the other language. Next is the very important feature. It's a machine independent language. It means it's a computer independent language because it's a high level language and it is easily understandable by the human being. So that is why this is the very useful language for the user, because user is a easily understandable C++ language as compared to the computer, as I discussed in the previous video. Next is the object oriented. Next feature is the object oriented. C++ is an object oriented language. It means in object oriented technique the programs are written on the basis of object. How to define the object? An object is a collection of data and function. How to define the data? Facts and figure is called data. And how to define the function? When we apply this data on some specific function, this function performs some specific job, then this function is called specific function for that data set. Next feature of this C++ language is the modular language or the submodule language. Actually, when we apply this C++ language on the very big project, like if someone give us some project, that project will be very big, like a bank salary management project. Then we divide this project in a sub-modules or a modular language. Supposed to be, for example, there is some lower class employment, some upper class employment, and some operation manager and the liking manager. So this language is categorized as different modules like this. Okay, here this is the banking system. So this is the category. This is the lower class employment, like the
grade 4 and etc. And this one is the upper, like the operation manager or manager. This is the inventory system. So this is the module. This module is only for the operation manager or the manager. This is module for the cashier and etc. And this one is the module for the lower class employment, like a equine, like a attendant, etc. etc. So this box is known as the module. So this module is the independent from the another modules. So this is the basic concepts of modular language. Number next is the standard libraries. So beta, basically C languages is depend on the some standard libraries. We will discuss in the later lectures, chapter number 3 or 4, what do you mean by the standard libraries. I want to show you a brief intro of this standard libraries. Supposed to be, this is the basic standard libraries of C++. This is the hash sign. Include like this. Include, so some basic standard libraries like IOSP, .h, Conio, .h, actually this is the standard libraries IOSP and Conio.h. Include the, we include it from the it's from the source files. The IOSP.h means input output stream, the Conio.h means the console. It means when we write input and output, this library is helpful for writing the input and output, and this Conio.h file, Conio.h directory is useful to show your output at the output screen of your system. So this is the basic subdirectories of your C++ language. That is the directories. There is a lot of directories like the math.h, and etc. We will discuss in later lectures. Number next feature, hardware control. The number next feature is the hardware control. This language is easily controlled with all hardware. Supposed to be if you want to add some beep, so it will be controlled by the languages, some speaker. If you want to add some another hardware, then like a printer, it's also be controlled by this language. And if we want to set a time to print after every 10 seconds, then print automatically print out your print document after 10 seconds. So it's easily controlled by the hardware control. Primitive. It's a small language. C++ is not a very big language. It's a very small language. It starts from the input, output, and end at the functions, and means this is a very small language, not very big language. Speedy language. The compiler of the C++ language is very light in terms of speed. It means it's a not burden on your hard drive of your system or your system drive. It's very easy, and it's easy in terms of speed. It's a very popular language in mathematical calculations. It's a very big project. In a physical computational problem and etc. Okay. Now we discuss. In this small introduction or brief, we discuss the history of the C++ language and the basic feature of the C++ language. Now I want to discuss with you the introduction of the programming. Why we are using programming? Okay. Basically,
The language is the problem solving. I want to give you a very simple example. Suppose to be थोड़ा सा मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि आपको पता हो कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, मकसद क्या है हमारा। बेटा बेसिकली आपके पास जो ये लैंग्वेज है C++ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कोई भी बच्चे आपके पास प्रॉब्लम होगा उसको आप सॉल्व करेंगे। मैं एक बेसिक एग्जांपल दूंगा आपके लिए। आप चाहते हैं कि सर हमने 2 + 2 को ऐड करना है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। यू नो हाउ टू ऐड द 2 + 2। आप जानते हैं कैसे आप ऐड कर सकते हैं। मैथ के अंदर 2 + 2 4 ही होगा, लेकिन अब इसको हमने अपना प्रॉब्लम बनाना है C++ में। दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग कि C++ में हमें दो को किस तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो अंडरस्टूड है कि इसका जो आंसर होगा 2 + 2 = 4। तो दिस इज द प्रॉब्लम 2 + 2। व्हाट डू यू मीन 2 + 2? इसका आंसर क्या होगा, ये प्रॉब्लम है। और जब हम इसको अपनी C++ लैंग्वेज की मदद से सॉल्व कर लेंगे तो ये इसका आंसर ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाएगा ही। जो आउटपुट स्क्रीन पे आंसर आएगा आपका, वो आंसर क्या होगा आपके पास? ये आंसर होगा आपके पास 4। तो ये हमारा एक बेसिक प्रॉब्लम था। हमने 2 डिजिट लिए, 2 न्यूमेरिक डिजिट लिए, उनको ऐड किया तो आउटपुट स्क्रीन पर क्या हो गया आपके पास? आंसर 4 हो गया। तो बेटा आपके पास बेसिकली हम इसको, ये इतना इजी नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट आउटपुट स्क्रीन पे, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों कुछ हमें इसकी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी पहले कि ग्रामर क्या है। उस ग्रामर के तहत हम इसको क्या कर पाएंगे, इसको हम ऐड कर सकेंगे, अदरवाइज हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम सारे इसकी ग्रामर पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप था प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग की मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है बच्चे, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो प्रॉब्लम क्या था आपके पास? प्रॉब्लम ये था कि 2 आपको न्यूमेरिक वैल्यूज दी गई, उन दोनों को ऐड करना है। उनका पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा? 4 होगा। तो ये आपके पास प्रॉब्लम होगा और उसका पॉसिबल सोल्यूशन आप क्या करेंगे, वो आपने फाइंड आउट करना है। नंबर नेक्स्ट। अच्छा ये बहुत सिंपल है। तो हर एक पर्सन की क्वालिटी है कि वो डिफरेंट अंदाज से सोचेगा, तो किसी का भी कोई ऐसा गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सोच जो जिस तरह से भी सॉल्व करना चाहेगा, बेसिकली वो रूल्स को C++ के रूल्स को फॉलो करता जाएगा, उसका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो उसमें घबराने की पहली बात की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली सबसे पहले जो अपने माइंड में जो चीज़ें बनाएंगे उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ होगी वो होगा एल्गोरिथम। बच्चे एल्गोरिथम होगा आपके पास, तो एल्गोरिथम होगा आपके पास एल्गोरिथम। नंबर फर्स्ट स्टेप किसी भी लैंग्वेज का वो होगा एल्गोरिथम। नंबर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास? फ्लो चार्ट। डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह वन बाय वन। उसके बाद फिर क्या होगी? कोडिंग और प्रोग्रामिंग। हम आज उसी को डिस्कस करेंगे, तीनों चीजों को। प्रोग्रामिंग ये 3 चीजों को, कोई भी प्रॉब्लम होगा सबसे पहले आप किसी भी प्रॉब्लम को लैंग्वेज की, ये लास्ट स्टेप है आपके पास कोडिंग प्रोग्रामिंग इन C++ और अदर हाई लेवल लैंग्वेज। C++ और अदर हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो हमें एल्गोरिथम की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय द एल्गोरिथम? सिंपल डेफिनेशन है, घबराने की जरूरत नहीं है इससे, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। इट मींस है क्या चीज? एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम में आपने करना क्या है बेटा? द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व द एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। द सिंपलेस्ट वे, हर एक बच्चे की सोच अपनी होगी। सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व द एनी प्रॉब्लम, स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज को सॉल्व करने के तरीके के नाम को आप एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो अगर हम इसी का एल्गोरिथम बनाएं, ये प्रॉब्लम था, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, इस एल्गोरिथम को हम लेंगे
ये जो एल्गोरिथम है आपके पास, इस एल्गोरिथम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको डेफिनेटली ये दो वैल्यूज रिक्वायर्ड है। एक वैल्यू ये रिक्वायर्ड है आपको, एक वैल्यू ये रिक्वायर्ड है, फिर ये ऑपरेशन रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है बच्चे? तो एक वैल्यू क्या है आपके पास, ये रिक्वायर्ड है, एक वैल्यू आपके पास ये रिक्वायर्ड है। बेसिकली ये ऑपरेंड कहलाते हैं। ऑपरेंड तब से याद रखिएगा, ऑपरेंड जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। और ये क्या है आपके पास, ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स जो उन पे ऑपरेट करेगा और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑपरेंड 2 है और जो ऑपरेटर है वो प्लस का है, जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो एडिशन का होगा और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। अब हम अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले आपके पास बच्चे इनपुट वैल्यू होगी तो आपको आउटपुट नजर आएगी। सिंपली आपने पहला, जैसे कि हमने डिफाइन किया कि हाउ टू डिफाइन द एल्गोरिथम, द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम और द स्टेप बाय स्टेप वे या प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, स्टेप 1 सिंपल इनपुट वैल्यू ऑफ 2। स्टेप 2 इनपुट वैल्यू ऑफ 2। ओके बेटा, ये हो गया, 2 स्टेप हो गए। देन स्टेप 3 सिंपली, बेसिकली है क्या जो आप अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो स्टेप 3 क्या होगा, सिंपल आप करेंगे ऐड 2 + 2 नंबर 4 स्टेप, आंसर विल बी 4। तो ये एक आपका सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है कि आपने इनपुट करवाया 2 को, फिर इनपुट करवाया 2 को, फिर क्या कर दिया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो भी आंसर होगा आपने उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो बेसिकली द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम हो गया आपके पास बेटा, ये सिंपल था आपके पास, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। उसके बाद अगर हम इस एल्गोरिथम को स्पेसिफिक शेप्स के अंदर लिखें, यानी कि इसकी हम वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दें। वेक्टोरियल मतलब कि कुछ बॉक्सेस की फॉर्म में इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें तो ये कैसे सॉल्व होगा, उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कुछ इनपुट के सिंबल हैं, कुछ आउटपुट के सिंबल हैं और कुछ उसके प्रोसेस के सिंबल हैं। तो डिफरेंट सिंबल को यूटिलाइज करते हुए इसको हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो सबसे पहले जो फ्लो चार्ट क्या है आपके पास, इसकी मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, द वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। वेक्टोरियल का मतलब पिक्चर की फॉर्मेट में आप उसको लिखते जाएंगे। अभी तो आपने स्टेप बाय स्टेप किया है, फिर आप उसको पिक्चर की फॉर्मेट में लिखते जाएंगे तो वो क्या होगी, आपके पास वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, आपके एल्गोरिथम की, और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 बच्चे, पहला स्टेप क्या है आपके पास, सबसे पहले आपको इनपुट चाहिए। तो इनपुट का जो इनपुट और आउटपुट के लिए जो आप शेप यूज करेंगे वो ये शेप होगी। इनपुट और आउटपुट के लिए जो बॉक्स यूज करेंगे वो आपके पास ये शेप होगी। ठीक है, इसको कहते हैं इनपुट और आउटपुट, IRO, इनपुट एंड आउटपुट आप ये यूज करेंगे। ठीक है, पहले से सैंपल है आपके पास फ्लो चार्ट के लिए। नंबर नेक्स्ट स्टेप था हमारा फ्लो चार्ट, उसके लिए पहली सैंपल है आपके पास ये फ्लो चार्ट के लिए। उसके बाद बेटा नंबर नेक्स्ट होगा, डेफिनेटली आपने इनपुट करवा लिया इस बॉक्स के जरिए, 2 को इनपुट करवाया, फिर दूसरे 2 को इनपुट करवाया, इनपुट आपके पास आ गए दोनों। अब नंबर नेक्स्ट स्टेप क्या था, उसको प्रोसेस करना। नंबर नेक्स्ट क्या था, प्रोसेस। प्रोसेस के लिए जो आप सैंपल यूज करेंगे फ्लो चार्ट के लिए, वो सैंपल आपके पास ये एक रेक्टेंगल टाइप होगी, इसमें प्रोसेस होगा। अब आपने इनपुट A करवाया था, ठीक है, A के अंदर आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर आपने इनपुट करवा लिया, क्या करवाया इनपुट आपने, दोबारा इसके अंदर B करवा दिया आपके पास। अब A और B की वैल्यू, इट्स मींस A के अगेंस्ट आपने वैल्यू ले ली 2
आपने वैल्यू ले ली 2, दोनों के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है आपके पास ए और बी, इनपुट के लिए आपने ये स्ट्रक्चर यूज करना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपने क्या किया बच्चे, प्रोसेस करवाया। प्रोसेस क्या था, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये प्रोसेस हो गया आपके पास। जो सिंबल यूज करेंगे आप आपका ये पहला स्टेप है आपके पास एल्गोरिथम का, ये दूसरा स्टेप है एल्गोरिथम का, और ये तीसरा स्टेप है एल्गोरिथम का। इन तीनों स्टेप्स में आपने क्या किया कि सम किया, तो आपके पास सम आ चुका है। सम के बाद क्या होगा आपके पास, ठीक है, तो आप आउटपुट शो करवाना चाह रहे हैं, डेफिनेटली आउटपुट में क्या होगा, दिस इज सिंबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इस तरह हम फ्लो दिखा देते हैं इसका। आप जो आउटपुट होगा आपके पास वो भी क्या होगा, किसी किस्म के पैरेलल टाइप जो है इसके अंदर आपके पास ये आउटपुट भी आ जाएगी। तो ये क्या हो गया आपके आउटपुट, और वो आउटपुट क्या होगी बच्चे आपके पास, रिजल्ट जो होगा आपके पास वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे एक सिंबल आप यूज करेंगे, दैट इज द ओवल, दैट इज द एंड और स्टॉप, और इससे ऊपर आप लोग यूज करेंगे, ये सेम करेंगे आप, ये स्टार्ट, ये सेम सिंबल। ये अब आपका एक फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। ये स्टेप आपके पास 4 था और ये लास्ट स्टेप था आपके पास 5, ठीक है। तो ये अब आपके पास इस तरह से आपने एल्गोरिथम बना लिया। इसके अलावा ये बेसिकली मैं आपको दोबारा रिपीट करूँ, ये तो हमने एग्जाम्पल सॉल्व की, वो एग्जाम्पल क्या थी आपके सामने हमने सॉल्व की एग्जाम्पल। अब हम इसको वन बाय वन एल्गोरिथम की सारे के सारी जो फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए सैंपल्स यूज करते हैं उसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सैंपल था अभी आपने देखा, फर्स्ट सैंपल क्या था, इनपुट और आउटपुट, उसके लिए आप ये वाला बॉक्स यूज करेंगे, ठीक है बच्चे। नंबर सेकंड जो आप यूज करेंगे प्रोसेस के लिए, प्रोसेस के लिए आप सैंपल ये वाला सैंपल यूज करेंगे, आपने देखा था मैंने एडिशन दिखाई आपको, ठीक है। और नंबर थर्ड, ठीक है, आप जो नंबर थर्ड करेंगे सिलेक्शन के लिए, राइट टाइप सिलेक्शन में 20 इज ग्रेटर देन बी, लाइक दिस, सिलेक्ट करना ग्रेटर है या नहीं सिलेक्शन के लिए, ठीक। और अगर इस स्टेप से पहले ले लें तो जो स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए आप सैंपल यूज करेंगे तो ये ओवल शेप है, जैसे मैंने पहले बता दिया, सबसे पहले आपने ओवल शेप यूज कर लिया, उसके बाद ये सारे स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये जो तीसरा था आपके पास सिलेक्शन था, ये प्रोसेस था, ये इनपुट आउटपुट था, और जो ऊपर आपने यूटिलाइज कर दिया वो क्या था आपके पास। उसके बाद बेटा फ्लो लाइंस एंड कनेक्टर, फ्लो लाइंस दैट इज द फ्लो, कैसे फ्लो करती है, नंबर 4 है फ्लो लाइंस, फ्लो लाइंस दैट इज द फ्लो के लिए। और उसके बाद नंबर 5 है कनेक्टर, कनेक्टर कैसे चाहिए, ये कनेक्टर है आपके पास कनेक्ट करने के लिए, इन फ्लो लाइंस को कनेक्ट करने के लिए, लाइक दिस। अगर ये कनेक्टर है आपके पास तो आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ऊपर यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसको उस प्रोसेस से, ठीक है, और नीचे आपने कनेक्ट कर दिया इसको, मैं सपोज करता हूँ एंड से, ये आपके पास कनेक्टर बन गया, कनेक्टर दरमियान में आपके पास, ठीक है। उसके बाद बचा नंबर 6 पर है फंक्शन के लिए। फंक्शन बहुत सिंपल है, हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे फंक्शंस क्या चीज़ है। जिस तरह अभी हमने मॉड्यूल को डिस्कस किया था, मॉड्यूलर लैंग्वेज है, तो ये जो सैंपल है ये फंक्शन के लिए यूज करेंगे। प्री पेयर फंक्शन बनाएंगे हम खुद से, फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा और एक बिल्ट इन फंक्शन होगा। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए जो हम सैंपल यूज करेंगे वो ये वाला सैंपल यूज करेंगे। तो ये आपका बेसिकली आज का लेक्चर हो गया, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री की है, लैंग्वेज की हिस्ट्री के बाद हमने उसके फीचर्स देखे लैंग्वेज के। फीचर देखने के बाद बेटा हमने उसको देखा है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज उसको डिस्कस कर लिया। फिर हमने देखा कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या था, उसको हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल के साथ। और डिस्कस करने के बाद फिर हमने उसको देखा कि इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास एल्गोरिथम का वो बनाया आप लोगों के लिए, फ्लो चार्ट बनाकर उसी एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया आप लोगों ने। कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या किया कि उसके जो बेसिक सैंपल्स थे, फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी फ्लो चार्ट की, वो मैंने आपको डिफाइन कर दी सारी। इसी को आप देखें, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो देन मुझसे आप शेयर करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।